Moving on to other stories, the Ayodhya Temple Trust has landed in a fresh controversy. India Today's investigation has found that the plot of land sold by the Ayodhya mayor's nephew to the Temple Trust was allegedly government land. Here's a special report filed by India Today's Arvind Ojha. Faith and trust are on test, as the custodians of Ayodhya, holiest site, appear to have landed themselves in trouble. Is the sale and purchase of the land for the Ayodhya Temple Trust turning into a story of greed in the name of Bhagwan Ram? India Today hit the ground to find out more. 300 meters away from the Ram Temple site, this is the exact land in the Ramchandra area where the opposition has alleged a big land scam. The land was bought by Ram Janmabhoomi Trust for 2.5 crore rupees in May this year. The deed documents accessed by India Today found Ayodhya Mayor Rishikesh Upadhyay's nephew Deep Narayan Upadhyay bought the same piece of land for just 20 lakh rupees in February and sold it to the Temple Trust for a staggering amount of 2.5 crores in May. If you find this shocking, well, this is just the tip of the iceberg. India Today found that in fact, the land in question is a government property and cannot be sold until it is converted into a freehold lease. The sub-registrar of Ayodhya himself spilled the beans on India Today's investigative cameras. इस मामले में नजूर की जमीन यही सुनने में हमें भी आया है 135 नंबर की ये नजूर का रेट है। तब जब नजूर का रेट है तो नजूर में वेस्ट होगा ही, फिर तो ट्रस्ट को मुकदमा करके अपना पैसा वापस ले लेगा जब तक कि वो फ्री होल्ड नहीं रहती। एकदम भाई पर्सनल को चेक से पैसा दिया है, कोई नगद किया नहीं। जिस दिन चाहने का उनके ऊपर क्लियर करके भैया तुमने जो लैंड हमको बेची है ये स्टेट लैंड, चलो आप पहले पैसा वापस लो। SB Singh claimed it was upon the buyer, in this case the Ram Mandir Trust, to investigate the ownership of the land being bought and to get the necessary documents. Buyer should be aware. कोई भी सामान खरीदिए तो पहले उसकी पर्याप्त जांच करिए। हमारे यहाँ 12 साल के अगर आप जमीन खरीद रहे हो तो रजिस्ट्री कार्यालयों में एनसी मिलता है, नॉन इन कवरेज सर्टिफिकेट मिलता है। आप पहले सेलर, हम लोग अपनी वेबसाइट पर बड़े-बड़े एक्सपर्ट लिखे हैं यही चीजें, जमीन खरीदने से पहले आप सेलर की पहचान सुनिश्चित कीजिए, राजस्व विलेखों से उसके पेपर का मिलान करिए। यहाँ पर ट्रस्ट जो जितना बड़ा समूह है इसने ही वेरीफाई नहीं किया, उसमें मतलब कितने नहीं होता। Devendra Prasad Acharya, who sold the land to Deep Narayan in February, has alleged he sold the land only after he was persuaded by Mayor Upadhyay and his nephew. Prasad Acharya claims he was assured that the land is being sold to the Temple Trust and will be used for the construction of the Ram Temple. ट्रस्ट के लोग हमसे मिले नहीं, हमसे मेयर साहब मिले थे, उन्होंने कहा कि उनको जरूरत है। आपको जानकारी है कि दीप नारायण ने आपसे 30 लाख में लिया जैसा बता रहे हैं, और ट्रस्ट को ये जमीन जो है 2.5 करोड़ में मिली है। हाँ, ये हमको नहीं जानकारी, आपसे सुन रहा हूँ, गलत किए। With so many questions coming to the fore regarding the two land deals and the involvement of Ayodhya's mayor, a BJP leader and two of his closest relatives, India Today decided to seek answers from the mayor himself and confront him. As mayor ran away, refusing to answer, he left a trail of many questions. The expensive shopping spree for the land for the construction of the Ram Temple in Ayodhya is sponsored by the donation of thousands of people who donated in complete faith. The deafening silence of the Ram Temple Trust and the Uttar Pradesh government raises many moral questions.
साल से आरोपी देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करें। A broader and a fair investigation only can provide necessary answers and, more importantly, help restore the faithful's trust in the custodians of the holy site. With Arvind Ojha in Ayodhya, Bureau Report, India Today.